हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम HP टेट मेडिकल के लिए बायोलॉजी के टॉप 200 MCQs करेंगे। यह टॉप 200 MCQs हम 4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज हम पार्ट 1 करेंगे जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस रहेंगे। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द मियोसिस अकर्स इन। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, ऑल सोमेटिक सेल्स, ऑल जर्म सेल्स, गैमीट्स या फिर स्पर्म्स। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, मियोसिस अकर्स इन ऑल जर्म सेल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Next question is the which of the following cells never undergoes S phase of cell cycle? ऑप्शंस दिए गए हैं, ह्यूमन नर्व सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, स्टेम सेल्स या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन nerve cells never undergoes S phase of cell cycle. Option number A is the correct. Next question is the mycoplasma belongs to which kingdom? Options दिए गए हैं, Monera, Protista, Fungi या फिर plants. Correct answer is the option number A. Mycoplasma belongs to the Monera kingdom. Option number A is the correct answer. Next question is the asexual reproduction by Conidia occurs in. Options दिए गए हैं, Yeast, Chlamydomonas, पेनिसिलियम या फिर ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलियम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया अकर्स इन पेनिसिलियम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गायनेकोमेस्टिया स्टेज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। ऑप्शंस दिए गए, डाउन सिंड्रोम में, क्लीनफेल्टर्स सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में या फिर एडवर्ड सिंड्रोम में। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, गायनेकोमेस्टिया जो स्टेज है वह क्लीनफेल्टर्स सिंड्रोम में ऑब्जर्व की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, टाइगर एंड मैन आर एग्जांपल्स ऑफ। ऑप्शंस दिए गए, होमोलॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन्स या फिर होमोप्लास्टिक ऑर्गन्स। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, टाइगर और जो मैन है वह एग्जाम्पल है होमोलॉगस ऑर्गन के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हर बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए आप होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स को ठीक से कर लें, इनके एग्जाम्पल्स आप ठीक से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाईली डीजनरेटेड केमिटोफिटिक स्टेज इज सीन इन। ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या फिर एंजियोस्पर्म। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइटा। हाईली डीजनरेटेड गेमिटोफिटिक स्टेज इज सीन इन टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। Next question is the syngamy in algae occurs in. Options are Archegonium, water, ovary या फिर soil. Correct answer is the option number B. Syngamy in algae occurs in water. Next question is the option number B is the correct answer. Water. Next question is the histamine is released from. Options दिए गए हैं, basophil and neutrophil, monocytes and mast cells, basophil and mast cells, lymphocytes and mast cell. Correct answer is the option number C. Histamine is released from basophil and mast cells. Option number C is the correct answer. Next question is the function of yellow bone marrow is. Options दिए गए, formation of RBC, formation of blood cells, storage of glycogen या फिर storage of fat. Correct answer is the option number B. The function of yellow bone marrow is formation of blood cells. Next question is the innermost layer of skin epidermis is. Options दिए गए हैं, stratum corneum, stratum malpighiae, stratum spinosum या फिर stratum lucidum. Correct answer is the option number C. The innermost layer of skin epidermis is stratum spinosum. Option number C is the correct. Next question is the Tornaria is the larva of. Options दिए गए हैं, starfish, balanoglossus, cuttlefish या फिर Holothurian. Correct answer is the option number B. Tornaria is the larva of balanoglossus. Option number B is the correct. Next question is a class of protozoa that contains only endoparasites. Options दिए गए हैं, Sarcodina, flagellates, Sporozoa या फिर none of these. Correct answer is the option number C. A class of protozoa that contains only endoparasites. Option number C is the correct answer. Sporozoa. Next question is the flame cells are concerned with. Options दिए गए हैं, respiration, locomotion, excretion या फिर reproduction. Correct answer is the option number C. Flame cells are
concerned with excretion. Next question is the sexual dimorphism is clearly seen in. Options दिए गए हैं earthworm, leech, ascaris and taenia. Correct answer is the option number C. Sexual dimorphism is clearly seen in ascaris. Next question is the peripatus is a connecting link between. Options are Annelida and mollusca, mollusca and echinodermata, Annelida and arthropoda या फिर arthropoda and mollusca. Correct answer is the option number C. Peripatus is a connecting link between Annelida and mollusca. Annelida and arthropoda. Option number C is the correct answer. Question number 17 is the which plant has the largest ovule? Options दिए गए Pinus, Mangifera, Cycas या फिर Nitum. Correct answer is the option number C. Cycas plant has the largest ovule. Option number C is the correct answer. Next question is the secondary growth is absent in. Options दिए गए dicot stem, dicot root, monocot stem या फिर gymnosperms. Correct answer is the option number C. Secondary growth is absent in monocot stem. Option number C is the correct. Next question is the locomotion by parapodia is observed in. Options are echinodermates, some annelids, some arthropods या फिर vertebrates. Correct answer is the option number B. Locomotion by parapodia is observed in some arthropods. Option number C is the correct answer. Next question is the which of the following is false for arteries? Options are have thick walls, have high rate of blood flow या फिर all of the above. Correct answer is the option number B. Which of the following is false for arteries? ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा. है वॉल्स, यह जो है वो आर्टरी से रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ क्रेनियन नर्व्स इन एमनियोट्स इज. ऑप्शंस आर 8 पेयर्स, 9 पेयर्स, 10 पेयर्स या फिर 12 पेयर्स. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी. Number of cranial nerves in amniotes is 12 pairs. Option number D is the correct. बार बार यह क्वेश्चन भी रिपीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स. ऑप्शंस आर टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, डाइनसेफ्लॉन एंड मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला या फिर मेड्यूला एंड स्पाइनल कॉर्ड. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए. कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द endosperm in coconut is. Options are cellular type, nuclear type, both cellular and nuclear type या फिर neither cellular or nor nuclear. Correct answer is the option number B. Endosperms in coconut is nuclear. Option number B is the correct. Next question is the hercocami is found in. Options दिए गए हैं cotton, marigold, calotropis या फिर millet. Correct answer is the option number C. Hercogamy is found in calotropis. Option number C is the correct answer. Next question is the inverted omega shaped ring of vascular bundle is found in. Options are rachis of cycas, leaflet of cycas, root of cycas या फिर leaves of pinus. Correct answer is the option number A. Rachis of cycas, inverted omega shaped ring of vascular bundle is found in rachis of cycas. Option number A is the correct. Next question is the in pinus root shape of xylem is. Options are V shaped, Y shaped, C shaped या फिर all of these. Correct answer is the option number B. In pinus root shape of xylem is Y shaped. Next question is the type of ovule of pinus is. Options दिए गए हैं anatropous, orthotropous, campylotropous या फिर succinotropous. Correct answer is the option number A. The type of ovule of pinus is anatropous ovule. पाइनस का जो ओव्यूल होता है वह एनाट्रोपस होता है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज मोस्ट कॉमन इन. ऑप्शंस आर फर्न स्पोरोफाइट, फर्न गैमेटोफाइट, रिक्सिया गैमेटोफाइट या फिर रिक्सिया स्पोरोफाइट. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज मोस्ट कॉमन इन रिक्सिया गैमेटोफाइट. Next question is the sporocarp of Marsilia is. Options are heterosporous, bisporous, homosporous या फिर non-sporous. Correct answer is the option number A. Sporocarp of Marsilia is heterosporous. Option number A is the correct answer. Next question is the
A stele without pith is called. Options are मेरिस्टिली, प्रोटोस्टिली, यूस्टिली या फिर डिक्टियोस्टिली. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, प्रोटोस्टिली. A stele without pith is called protostele. Next question is the which of the following is an aquatic pteridophyte? Options are Lycopodium, Azolla, Equisetum या फिर Pteris. Correct answer is the option number B. Azolla is an aquatic pteridophyte. Option number B is the correct. Next question is the which of the following pteridophyte show secondary growth? Options are Lycopodium, Isoids, Marsilia या फिर Pteris. Correct answer is the option number B. Isoids shows secondary growth. Option number B is the correct. Next question is the biggest bryophyte is. Options दिए गए हैं Rixia, Dawsonia, Anthoceros या फिर Markensia. Correct answer is the option number B. The biggest bryophyte is Dawsonia. Option number B is the correct answer. Next question is the pteridophytes are known as. Options are vascular cryptogams, phanerogams, cryptogams या फिर amphibians of plant kingdom. Correct answer is the option number A. Vascular cryptogams. Pteridophytes are known as vascular cryptogams. Option number A is the correct answer. And bryophytes are known as amphibians of the plant kingdom. यह दोनों क्वेश्चन जो है वह HP टैट में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइकोपोडियम एक्सिबिट. ऑप्शंस आर हिट्रोस्पोरी, होमोस्पोरी, बोथ हिट्रोस्पोरी एंड होमोस्पोरी या फिर नन ऑफ दीज. करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, लाइकोपोडियम एक्सिबिट होमोस्पोरी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Then question number 36 is the trabeculum present in the stem of Selaginella is. Options are endodermis, epidermis, pericycle या फिर cortex. Correct answer is the option number A, trabeculae present in the stem of Selaginella in epidermis. Option number A is the correct answer. Endodermis. Option number A जो है वह correct हो जाएगा. Next question is the which one of the following is an egg laying member? Options are mongoose, platypus, whale या फिर mole. Correct answer is the option number B, platypus is an egg laying mammal. Next question is the Ephira larva is found in the life cycle of. Options are Aurelia, Obelia, Physalia या फिर Adamsia. Correct answer is the option number A, Ephira larva is found in the life cycle of Aurelia. Option number A is the correct. Number of peristome teeth in capsule of Funaria is. Options are 8, 16, 32 या फिर 64. Correct answer is the option number C. Number of peristome teeth in capsule of Funaria is 32. Option number C जो है वह correct होगा. Next question is the polymorphism is seen in. Options are Coelenterata, Annelida, Arthropoda या फिर Echinodermata. Correct answer is the option number A, polymorphism is seen in Coelenterata. Option number A is the correct answer. Next question is the syncytial epidermis is found in. Options are Planaria, Ascaris, Earthworm या फिर Starfish. Correct answer is the option number B, syncytial epidermis is found in Ascaris. Next question is the Java man was discovered by. Options are W.C. Pye, Eugene Dubois, Darwin या फिर Robert Brown. Correct answer is the option number B, Java man was discovered by Eugene Dubois. Option number B is the correct answer. Next question is the a chitinous exoskeleton occurs in. Options are birds, insects, fishes या फिर mammalia. Correct answer is the option number B, a chitinous exoskeleton occurs in insects. Option number B is the correct. Next question is the which one of the following is a non-parasitic mammal? Options are mosquito, tapeworm, sea anemone या फिर leech. Correct answer is the option number A, mosquito is a non-parasitic animal. Option number B is the correct answer. Option number A is the correct answer.
Next question is the main excretory product in birds and reptile is. Options are urea, uric acid, ammonia या फिर guanine. Correct answer is the option number B, uric acid. Main excretory product in birds and reptile is uric acid. Next question is the testes occurs in earthworm in the segments of. Options are 11 and 12 segment, 12th and 13th segment, 14th and 15th segment या फिर 10 and 11 segment. Correct answer is the option number D. Testes occurs in earthworm in the segment 10 and 11. Option number D is the correct. Next question is the metamorphosis in cockroach is regulated mainly by. Options are corpora cardiaca, prothoracic gland, corpora alata या फिर brain. Correct answer is the option number C. Metamorphosis in cockroach is regulated mainly by corpora alata. Option number C is the correct answer. Next question is the structure of ribosomes consists of. Options are DNA and proteins, RNA and proteins, RNA and amino acid या फिर RNA and DNA. Correct answer is the option number B. The structure of ribosomes consists of RNA and proteins. Option number B is the correct. Next question is the polytene chromosome is first observed in. Options are housefly, honeybee, Drosophila या फिर none of these. Correct answer is the option number C. Polytene chromosome is first observed in Drosophila. Next question is the which hormone is secreted by the testes. Options are testosterone, progesterone, TSH या फिर insulin. Correct answer is the option number A. Testosterone hormone is secreted by testes. तो ये आज के लिए टॉप 50 क्वेश्चन से बायोलॉजी के, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लें. अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. तो चलिए बस आज की क्लास में बस इतना ही.